Okay, beta. So next after these definition is basically the concept of which is called the Hess's law. जिसको हम Hess law कहते हैं. And it is very important because by using Hess law, we can find out the enthalpy change of any given reaction, and especially for those reaction in which it is impossible to find out the enthalpy change by using a calorimetry. ठीक है? तो अगर हम calorimetry apply नहीं कर सकते, so we can apply the Hess law. And to start this, if I say that this is the enthalpy profile diagram for a chemical reaction, any chemical reaction, let's say this is an endothermic reaction. So the energy of reactant is less, the energy of product would be more, and you can say this is an endothermic reaction. This is reactant and this is product. If I ask you enthalpy change mark कीजिए, so you could say this is basically the delta HR, है ना? This is delta HR, which is positive in this case. Agree? Now, if I ask you to mark activation energy, so आप mark करेंगे from here till the top. This is basically the activation energy value. Clear? And if I ask you on this diagram, can you draw the activation energy value with catalyst, or draw the enthalpy profile diagram for this chemical reaction with catalyst? So we only decrease the activation energy value. ऐसे ही ना? So can I say that this green line is basically the EA without catalyst? Sorry, with catalyst. Again, and this case is obviously the black one. With catalyst. Now, answer one thing. Catalyst क्या करता है? Catalyst speed up the rate of reaction. कैसे करता है? By lowering the activation energy value. By performing the same reaction through an alternative route. ठीक है? अब ये बात ध्यान में रखते हुए, is there any difference in the delta HR value with catalyst or without catalyst? क्या enthalpy change पे कोई फर्क आया? नहीं आया ना? क्यों फर्क नहीं आया? Because delta H is basically the energy of or enthalpy of product minus enthalpy of reactant. If you are getting the same product from the same reactant, तो ये तो कभी भी change नहीं होगी ना, है ना? No matter with catalyst बन रहा हो या without catalyst बन रहा हो, and this diagram is a proof. Can I say that this value remains unchanged? ये change नहीं हुई. And this is a statement of a Hess's law. Hess law states that the enthalpy change, which is delta HR, of a chemical reaction is independent of the route followed by the reaction. जिस तरह भी बन रहा है, product उस पर depend नहीं करता, provided that you're getting the same product from the same reactant. अगर chemical reaction में reactant और product same है, अब वो with catalyst or without catalyst, so the energy change always remains same, because the enthalpy change is the difference between enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Enthalpy of product minus enthalpy of reactant. So it's always ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब एक काम करते हैं, इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं. Hess law states that the enthalpy change of a reaction is independent of the route followed by the reaction. यानी route पे depend नहीं करता. ठीक है? Provided that the initial and final conditions are same. अच्छा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम? It means that you are getting the same product from the same reactant. Reactant और product change नहीं हो रहा है. ठीक है?
So the enthalpy change of a chemical reaction is independent of the rules followed by the reaction, provided that the initial and the final condition are same. और enthalpy profile diagram से आपने खुद ही आंसर किया कि enthalpy change पे कोई फर्क नहीं आएगा. दो different route हैं with catalyst and without catalyst, but the enthalpy change remains same. डन है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई? देखें, I hope you copied it down. लिख लिया ना? Right. Now we have a chemical reaction. In this chemical reaction, we have, let's suppose this is reactants. एक general reaction लिख रहा हूं. Reactants हैं A plus B forming C plus D. And I'm writing it down that delta HR. इसकी enthalpy change होगी, वो कहलाएगी enthalpy change of a reaction. Delta HR. You can say that it's a standard enthalpy change of a reaction. सही है ना? अगर ऐसा हो कि ये A plus B पहले चला जाए X plus Y में और फिर X plus Y से जाए इसमें, तो कैन आई से दैट दिस इज बेसिकली डेल्टा H1 से डोनेट कर देते हैं एंड दिस इज डेल्टा H2. दिस इज कॉल्ड एनर्जी एनर्जी साइकिल. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कैन आई से दैट, कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस डायग्राम कि डायरेक्ट रूट कौन सा है और इनडायरेक्ट रूट कौन सा है? डायरेक्ट रूट इज दिस वन, डेल्टा HR, है ना? एंड इनडायरेक्ट रूट इज दिस वन. तो as per the Hess law, enthalpy change of a direct route is equals to the sum of enthalpy changes of indirect route. यानी डेल्टा HR डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर होगा. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द Hess लॉ, और हम इसकी इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं. Now the calculation based on Hess's law. Examination point of view से अब तक जो हमने पढ़ा उसमें only the statement of a Hess law is important. Now we have to learn how we can calculate the enthalpy change by using the Hess law. So I have divided this into some categories. Jaise category A, if you have to find out delta HR, enthalpy change of a reaction, from the data of delta HF. Delta HF is enthalpy change of formation. ठीक है, अगर आपको डेटा गिवन होगा किसका, डेटा ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, तो हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे? नाउ लेट्स सपोज you have a chemical reaction in which reactants reacting together and they forming any particular product. The enthalpy change is called delta HR, which is standard enthalpy change of a reaction. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए,
enthalpy change of formation may, you know that formation is the formation may basically we have elements involved. When 1 mole of a compound is formed from its elements. Can I say that the elements which are present on the reactant side, the same element also present on the product side? Kaise? देखिए, if you have a carbon on the reactant side, it might change to carbon dioxide or CH4, but carbon remains carbon. है ना? सिर्फ अपने molecular form change करता है, अपना substance change करता है. ऐसा तो नहीं होता ना कि you have a chemical reaction in which you have a reactant side पे carbon और react करने के बाद silicon बन जाए. नहीं, हम बैलेंसिंग में क्या करते हैं, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, दैट्स व्हाट वी नॉर्मली डू. सो इन एनी केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट्स रिमेन सेम, द एलिमेंट चेंज देयर कंपाउंड व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ठीक है. सो कैन आई से दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव द सेम एलिमेंट्स. मैंने नीचे एलिमेंट्स लिख दिए. नाउ कैन आई से दैट इन्हीं एलिमेंट से मिलके जब रिएक्टेंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड enthalpy change formation of reactant. Agreed? नहीं? Any reactant से मिलके when you have the product form, this is called delta H formation of product. Right? This is the energy cycle. देखो, whenever you have to draw energy cycle for any given chemical reaction on the basis of formation, आपने क्या करना है? You have to write down the element, arrow की direction ऊपर की तरफ, and that's it. Done. ठीक है? Can you identify the direct route and the indirect route in this one? Direct route is, I think this one is the indirect route. And delta HF reactant plus delta HR. And this one is the direct route. You can follow the arrows and you can easily find out. So can I say that the enthalpy change of a direct route, which is enthalpy change of a formation of product, is equals to enthalpy change formation of reactant plus delta H R. है ना? Direct route, which is enthalpy change of a formation of product, is equals to delta HF of R plus delta HR. नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो, सारी चीजें ultimately going towards product. ठीक है? Direct route is when the element directly join together and give you that product. Indirect route क्या है कि element पहले reactant में जा रहा है और reactant फिर product में convert हो. ठीक है ना? That's the indirect route. And as per the Hess's law, the enthalpy change of a direct route, which is this one, is equals to the sum of enthalpy changes of indirect route. मैंने उसको बराबर ले लिया. If I have to find out delta HR, and I'm going to set this equation for delta HR. So this is enthalpy change formation of product minus enthalpy change formation of reactant. शॉर्टकट आ गया हमारे पास एक. ठीक है? शॉर्टकट क्या आया? If you are provided with the data of formation and you have to find out the enthalpy change, just do product minus reactant. क्या करना पड़ेगा? Product minus reactant and you'll get your answer. ठीक है? Product minus reactant. राइट? इसकी की एक एग्जांपल पे से अप्लाई करते हैं. आई थिंक दिस इज डन. समझ में आ गई बात? If now I'm going to give you a equation and I'm going to ask you कि इस equation में पहली बात यह है कि Hess एनर्जी साइकिल बना के दिखाइए Hess लॉ का, और Hess लॉ लिख के दिखाइए. ठीक है? So this is the equation. Example, you have Na2 delta HR. This is enthalpy change of a reaction. And if I have to make energy cycle based on the enthalpy change of formation, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? Elements. Elements are sodium, carbon and
किसी एक साइड को देख के बैलेंस कर लेते हैं. So on the left hand side, you have 2 sodium, 1 carbon, and 3/2 O2. These are the elements involved. और जब इन एलिमेंट से मिलके ये बनेगा तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज formation for Na2CO3. On this side, you have two formation values involved. So this is called delta HF of Na2O, sodium oxide, plus delta HF of carbon dioxide. Now, which one is a direct route? Yes, we know that. Yes, this one is an indirect route, and this one is a direct route. Now, write down the Hess law. Direct route is delta H formation of sodium oxide plus delta H formation of carbon dioxide is equals to delta H formation of Na2CO3 plus delta HR. सही ना. एलिमेंट लिख के बैलेंस किया, एरो की डायरेक्शन ऊपर. ठीक है. ऑन द एरो जस्ट राइट डाउन कि कौन कौन सी फॉर्मेशंस इन्वॉल्व. अगर लेफ्ट साइड पे अब्दुल्ला, अगर लेफ्ट साइड पे कार्बोनेट के अलावा कुछ और भी होता तो मैं दूसरी वैल्यू भी लिखता. लेट सपोज अगर वाटर होता तो मैं लिखता है फॉर्मेशन प्लस फॉर्मेशन ऑफ H2. Now set the equation for delta HR, which is equal to enthalpy change formation of Na2O plus delta H formation of carbon dioxide minus delta H formation of Na2CO3. Now you can see this one is product and this one is reactant. वही आ रहा है product minus reactant. So that's how you have to draw the energy cycle, and you can write the Hess's law or Hess law for any given cycle. Then, beta, any confusion in this one? Let's copy this down, and then we will do a bit of calculation based on the data of formation. Done? Okay. Now coming towards the first question, take out your calculator. Now you can see this is question number 7 of our worksheet, but we'll do it later on. Now you can see that it says that define with aid of an equation which include a state symbol the standard enthalpy change of formation of carbon dioxide. अभी हमने लास्ट क्लास में भी इसी एक क्वेश्चन को दिया था. ठीक है.
So you can write C plus O2 forming CO2. State symbol लिख दीजिएगा. Definition: when 1 mole of a carbon dioxide is formed from carbon in a solid form and oxygen in a gas form under standard condition. Now this is the question. It says relevant enthalpy change of formation values for the reaction that synthesis methanol are given in a table. Use these values to calculate the delta HR for this reaction for the synthesis of methanol. Include your sign in your calculation. Now, you can clearly see the data of formation is given. So formation के लिए हमने क्या पढ़ा है कि we do product minus reactant. Now, place all these value. Carbon dioxide is minus 394 plus hydrogen is कितनी given है? नहीं given, so क्या करेंगे? 0, because delta H formation of elements are 0. तो elements की तो कभी भी given नहीं, ठीक है? In a similar way, CH3OH is minus 201 plus H2O is minus 242. Now this is your reactant and this is your product. Delta HR is equals to product minus reactant. Okay, there are two negatives, so make sure that you add them up. What is the final answer? Product minus reactant. What's the answer, beta? Minus 49 kilojoules per mole. That's the right answer. Okay? Clear? Easy? Mushkil? What is on it? Try this one. Same question, same format. They ask the definition and then they ask about this. Now you are provided with a chemical equation and the relevant data of formation is given. Formation value is always for the formation of 1 mole of a compound. Okay? So make sure that you multiply this value by 2. Minus 2 times of minus 2, 3, 9. Forming minus 184 plus minus 286. Now delta HR minus 184 plus minus 280 product minus reactant. कितना आ रहा है? Product minus reactant. How much is the answer? What's the answer, beta? Answer is plus 8. ठीक है? और डन बेटा? कुछ स्लिप मिस्टेक हो रहे थे? Done? Easy? Can you solve this one? And you just take out your calculator and doing product minus reactant, you're doing it wrong. Because in this one, the data of it's not formation. It means that you can't do product minus reactant here. अब सवाल ये कि यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ और आसानी आपके लिए कर देते हैं. यहाँ पे करेंगे we do reactant minus product. Do it. If the data of formation is given, product minus reactant. If the data of combustion is given, reactant minus product. अभी हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी डिटेल में. नहीं, यही दो, या तो कंबस्शन का डाटा गिवन होगा या फॉर्मेशन का डाटा. माइनस प्लस वैल्यू. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज 283 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन. कंबस्शन तो होती है ना हाइड्रोजन की, तो वैल्यू लगाएंगे आप. ठीक है, विच इज माइनस 286 फॉर्मिंग
CH3OH, which is minus 726. This is your reactant. This is your product. Just do reactant minus product. Stand up. Reactant minus delta HR is equals to minus 129 kilojoules per. ठीक है, ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि whenever you have to solve these type of question, make sure that you look at the data given. If the data of formation is given, product minus reactant. If the data of combustion is given, it's always reactant minus product. Let's do this one in detail first. So my B part of calculation is basically how to find out, to find delta HR or delta HF from the data of delta H combustion. ठीक है बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन में डेटा ऑफ कंबस्शन गिवन होगा तो आपने क्या करना है. दिस इज बेसिकली द टॉपिक. कैलकुलेशन हमने सीख ली है, शॉर्टकट हमारे पास आ चुका है, विच इज द रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. देखते हैं ये आया कैसे. Okay, let's talk about a chemical reaction. You have reactants reacting together, forming product. ठीक है, and enthalpy change involved is called delta HR, जो आपके फाइंड आउट करनी है. पर एक बताइए, as I said, elements on the reactant side and product side are same, है ना. So if you have a carbon on the reactant side in any form, after combustion, what should be the product? If you have a carbon on the product side in any other form, after combustion, what should be the product? Hydrogen on both sides, water. So it means that, can I say that the combustion product of reactant and product is same? यानी आपके पास जब एलिमेंट सेम होंगे तो ये रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे हो, दे गिव यू द सेम कंबस्शन प्रोडक्ट आफ्टर कंबस्शन. यानी अगर कार्बन सी फॉर्म में रिएक्टेंट साइड पे है, CH4 फॉर्म में प्रोडक्ट साइड पे, आप सी को कंबस्ट करेंगे यानी सॉलिड कार्बन को प्रोडक्ट क्या मिलेगी? इफ यू कंबस्ट CH4, प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो कंबस्शन प्रोडक्ट सेम होती है. तो कैन आई से दैट whenever you have reactants combusted, they give you this combustion product, and this is called enthalpy change combustion of reactant. And whenever the product combusts, they will give you the same combustion product, and the enthalpy change is called enthalpy change combustion of product. Clear? So combustion of reactant, combustion of product, and they have the same combustion product. Can we identify the direct route? C of R or C of P? This is the direct route. Agreed? And this is the indirect route. है ना? Just follow the arrow. This plus this is equal to this. ठीक है? Now, can I write down the Hess's law that delta HRSC of reactant, which is the direct route, is equals to delta HR plus enthalpy change combustion of product. If I set the equation for enthalpy change of reaction, delta HR, this is enthalpy change combustion of reactant minus enthalpy change combustion of product. वही आ गया reactant minus product. Got it? It's going to be the same thing. Reactant minus product. So enthalpy change, if the formation data is given, it's always product minus reactant. If the enthalpy change of combustion is given, it's always reactant minus product. This sometimes create a confusion
by giving you the combustion of a molecule and the formation of carbon dioxide or the formation of hydrogen or something. ठीक है? उस केस में हम किस तरह डील करेंगे अभी हम देखते हैं. पहले just solve few questions. This one is done. Okay. Can you please solve this one? Hydrazine reacts with oxygen according to the following equation. N2H4O2 forming N2 plus 2H2O. Use the data in the table to calculate the standard enthalpy change of this reaction. And the data of, so we're going to do product minus reactant. This is the equation given. Just do product minus reactant and find out the delta HR. So the value of hydrazine is 50.6 plus oxygen is 0, forming nitrogen 0 plus 2 times of minus 241.8. So delta HR, which is product 2 times of minus 241.8, product minus reactant, which is 50.6. So the answer should be negative. And what should be the answer? Minus 534.2, 534.6, 534. Kilojoules per. Take it easy. This question. The standard enthalpy change of the reaction can be determined by using a standard enthalpy change of combustion. Okay. And the combustion value of this C2H4 is minus 1411. And what is the combustion of water? 0. Water or carbon dioxide or oxygen is always 0. C2OH की combustion value 1367. Delta H निकालने के लिए you have to do reactant, which is 1411 minus product, which is minus 1367. And the answer is minus 44 kilojoules per mole. 2-3 marks, very easy. है ना? इतना कोई मुश्किल नहीं. आप can, I assure you can easily do it. That's the last one. You have to do it from P2 and then it's almost done. हम काफी सारी worksheet कर चुके हैं. So can you do it, this last one from P2, this one, and then we're going to do P1. Don't forget to multiply the formation value of ammonia by 2. ये common error beta. This is the common error that's normally said. Water value is minus 287 plus CONH2 value is minus 320.5. अच्छा देखो आपने notice किया, I'm always writing down the value below this equation. मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है. Carbon dioxide is minus 414.5 plus ammonia, which is 2 times of minus 81. Now this is your case in which you have to do formation है तो product minus reactant करना पड़ेगा. Now to get delta HR is equals to product minus reactant, which is minus 287 plus minus 320.5. And what is the final answer, beta? Minus 1 number form में बताओ. Minus 1184 kilojoules per mole. Please cross check it. थोड़ा सुना सुना कम लग रहा है यहाँ से. एक दफा क्रॉस चेक कर लीजिए.
हाँ, देखिए whenever I say कि थोड़ा सा आंसर कम सुना सुना लग रहा है, इसका मतलब there must be an minus 610. Yeah, that's the answer जो मुझे थोड़ा सुना सुना लगा, ठीक है? Because I solved these questions so many times, so I have an idea कि कौन सा. Can you do it now? ठीक है? There are some different things, but I think a major part is something like that. ठीक है? Clear? Problem कहाँ है कि यहाँ देखिए, देखें. They ask you to find out the formation of ketene. This is the question. They ask you the data to calculate the standard enthalpy change of formation of ketene. अब ketene का फॉर्मूला क्या है? ये रहा. हमें नहीं पता था, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट द फॉर्मूला इज गिवन. सो मैंने लिखा जनाब CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. बिकॉज द इक्वेशन इज नॉट गिवन, तो इक्वेशन मुझे खुद बनानी होगी. अब फॉर्मेशन की इक्वेशन मैंने बनाई. आप देखिए, इट इज 2 टाइम्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. एग्रीड? ठीक है? ये डेल्टा HF है जो मुझे पता लगानी है. सही है? एज आई सेड के आपको फॉर्मेशन पता लगानी है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट न्यूट्रलाइजेशन. डाटा क्या गिवन है ये देखिए. आप मुझे बताइए कि डाटा क्या गिवन है. दे डिडंट मेंशन इट. यू कैन सी द कंबस्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, combustion of hydrogen is given, and combustion of ketene is given. Look at the main compound. आपका मेन कंपाउंड कौन सा है? मेन कंपाउंड है कीटीन. कीटीन की क्या वैल्यू गिवन है? तो आप इसको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे. व्हाई? बिकॉज कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कीटीन इज ठीक. ये जो आपको वैल्यू दी है ना, ये बेसिकली द कंबस्शन ऑफ कार्बन इज गिवन. कंफ्यूज करने के लिए उसे फॉर्मेशन लिखा है. बात समझ आ रही है? सो नेवर ट्रस्ट ऑन कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड वाटर, सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इनकी कंबस्शन और फॉर्मेशन एक जैसी होती है. So to create a confusion, they give you all the combustion value and the formation of water. They give you all the formation value and the combustion of carbon. तो आपको पता होना चाहिए कि combustion of carbon in reality is the formation of carbon dioxide. ठीक है? Clear? So can you solve this one now? आपको तो अब सिंपल रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, and you can do it. तो चलो कर लेते हैं, क्या बुरा है. So 2 times of combustion of carbon, which is minus 395, plus combustion of hydrogen is minus 286, forming combustion of ketene is minus 1028. And you're doing a delta HR, which is reactant, 2 times of minus 395 plus minus 286, forming, sorry, reactant minus product, so which is minus 1028. And delta HR is minus 48 kilojoules per mole. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. इज इट क्लियर? Combustion of carbon is the formation of carbon dioxide. Don't trust on carbon dioxide and this one. As you can see, आसानी से हो जाएगा ना ये तो. I'm not going to do all question now. You have to do it. अच्छा, देखिए. In this question, this is the equation given, and these values with equation are given. And technically, these are the combustion values given. So you are provided with the combustion of carbon. Yes, we need it. Provided with the combustion of hydrogen and the combustion of C2H4, which is a product. So we have to do here reactant minus product and we will get up. ठीक है? Can you solve this one for me, please? Question number 7. The standard enthalpy change of formation of iron oxide, FeO, iron 2 oxide basically, and aluminum oxide are this and this. पहली वाली 266 iron oxide की है, and second वाली जो है वो it's for aluminum oxide. Okay, and they ask you is calculate the standard enthalpy change of this given reaction.
Only two values are given. Why? Because good, excellent. Because the value of element aluminum and iron is 0, and this one is minus 1676. तो अब आप कर क्या रहे हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं, है ना? बिकॉज द डेटा ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन. क्लियर? दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है. आंसर इज बी. ठीक है, डन. कंबस्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कंबस्शन इज 0 बेटा. Okay, can you do it this one and this? 4 carbon plus 5 hydrogen forming and the data of. Actually, we cannot find out this equation key formation value. We cannot find out by sorry, this equation की value by formation. Because इसमें तो reactant side पे element नहीं, तो equation ही सिर्फ formation की है, और इसमें left side पे क्या है? Elements हैं. तो enthalpy change of formation अगर किसी भी equation की निकालनी है तो हमेशा data of combustion ही given होगा, क्योंकि एलिमेंट वरना रिएक्टेंट साइड पे तो सारी वैल्यूज आपको 0 लगानी पड़ेंगी, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे. ठीक है, तो यस, इन दिस वन यू हैव टू डू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. तो लगा दीजिए जनाब, रिएक्टेंट आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ कार्बन माइनस 394 प्लस 5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन माइनस 286. दिस इज योर रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट इज माइनस 2877. तो डेल्टा एच आर आपके पास आ जाएगा -129 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, इजी हो जाएगा आराम से, कोई मसला तो नहीं है ना. वन मोर, as you can see, the last concept, the C1, C bar, which is delta HR from bond energy. ठीक है, and before I start this, I have to define bond energy. What is the bond energy? Bond energy क्या होती है? Bond energy is basically the energy required to break a bond. ठीक है, and we know that we defined it in terms of bond breaking, but we know that the bond breaking is always positive. Endothermic होती है ना? And the bond formation is always exothermic. Clear? And from our O levels data, we know that delta HR from bond energy, it's bond breaking minus bond formation. You remember O levels में हमने किया था BB minus BF. Bond breaking minus bond formation. Use all the positive value. There's already a negative sign in this formula, so it's always bond breaking minus bond formation. Okay. Now, if the energy required to break the bond is greater than the energy released when new bonds are formed. Bond breaking क्या है? Bond breaking reactants की होती है, ठीक है? So delta HR की value आ जाएगी positive. The reaction is more endothermic, है ना? If the energy required to break the bond of reactant is greater than the energy released when new bonds are formed, ठीक है? ये बात याद रखना कि ये bond breaking आपके पास हमेशा होती है reactants की. In any chemical reaction,
पहले रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड देन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस, और इन्हीं का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, इज बेसिकली कॉल्ड डेल्टा एच। इन अ सिमिलर वे, अगर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन की वैल्यू लार्ज हो, ज्यादा एनर्जी, एक्सोथर्मिक वैल्यू इज लार्जर, एंडोथर्मिक वैल्यू इज स्मॉलर, तो डेल्टा एच आर की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है बेटा, इन दो चीजों का ख्याल। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, नोट करके मैं यहां लिख रहा हूं, इन data booklet or with the question of the data, the average bond energy values are given. नहीं, यानी in a question के data में भी they will give it to you. The same data of the booklet is given with the question paper. ठीक है, same question paper. The data booklet, the average bond energy values are given. ठीक है, so sometimes answer of calculations might differ from actual value. ठीक है, इस बात का मतलब क्या है समझ लीजिए। देखें, यू हैव OH बॉन्ड प्रेजेंट वाटर, है ना, प्रेजेंट इन अल्कोहल, प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, you have so many types of OH bond present. So the bond energy value of this OH bond is basically different in all these types of bonds. अब आपके लिए तो बहुत मुश्किल है ना कि आप स्पेसिफिक वही वैल्यू यूज करें। So in data booklet they calculated and they just find out the average value of all these OH bond, और वो एवरेज वैल्यू आपको दे दी, which slightly differ from the actual bond energy value. तो जब आप डेटा बुकलेट की बॉन्ड एनर्जी से आंसर निकालते हैं तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा होता है, और आपसे रीजन पूछता है व्हाई योर आंसर डिफर फ्रॉम द आंसर प्रेजेंट इन द बुकलेट्स। किसी और बुकलेट में जो इसकी इंथैल्पी चेंज गिवन है, आपका आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बिकॉज वी यूज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। ठीक है, विच स्लाइटली डिफर फ्रॉम द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। इफ आई शो यू, देखो बेटा यहां पर ये तो आपके पास वो मॉलिक्यूल हैं जो डायटोमिक होते हैं, है ना। डायटोमिक का मतलब H2Cl2 Br2 HF, है ना, HBr HCl। इनमें तो इनके अलावा और कोई और टाइप का ये बॉन्ड नहीं हो सकता ना। तो देखो वैल्यू के आगे क्या लिखा है, दीज आर द एग्जैक्ट वैल्यू, टॉप पे देखें। बट इफ यू टॉक अबाउट दीज बॉन्ड्स, CH बॉन्ड, एल्केन एल्कीन अल्कोहल हर जगह हो सकता है, हर जगह बॉन्ड एनर्जी माइट बी स्लाइटली डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। तो जिनकी एवरेज है उनकी एवरेज यूज करेंगे, जिनकी एक्चुअल है उनकी एक्चुअल यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए जनाब, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल फ्रॉम पेपर 2 एंड देन दैट्स द लास्ट ऑफ दिस वन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। It says ammonia manufactured by Haber's process use the bond energy data from the data booklet to calculate the enthalpy change. This is basically a O-levels question. सही है? You know that nitrogen is nitrogen triple covalent bond nitrogen plus 3 times hydrogen single bond hydrogen. Agreed? Reactant forming 2 times of 3 of nitrogen hydrogen bond. एक ammonia में you have 3 NH bond, NH3 है ना, and you have 2 moles of ammonia. So basically 6 से multiply होगा NH. Clear? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी यहां से देख लेने, एनर्जी इज 944। तो मैंने इसकी वैल्यू लगाई 944 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन विच इज 436, 436 मेकिंग 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑफ NH बॉन्ड। NH बॉन्ड हमें यहां पर मिलेगा बेटा, इज 390।
So yes, I use 390 here. Now, ये जो reactant है, this is bond breaking, and the product is bond formation. Just do BB minus BF for delta HR निकाल लो. Bond breaking minus bond formation and give me the delta HR. Well, -38 kilojoules per mole. पता नहीं क्यों थोड़ा कम सुना हुआ लग रहा है, but I'm -88. ये भी कम सुना हुआ लग रहा है. Okay, whatever it is, the method is same. Just plug in all the values in a calculator. -88. Okay, थोड़ा सुना सुना लग रहा है. -88. गुड. सही है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, हो जाएंगे. बट आई थिंक ये मुश्किल होगी जब इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा, because we haven't done organic and you have no idea about the structure of these molecules. So for this question number 1, I'm giving you the displayed form of these molecules, ताकि आप फिर खुद काउंट करके कर लें. पहले ये इक्वेशन कॉपी करो अपने पास, and then copy this displayed form, which is I'm going to, and then you have to count all these bonds. खुद से करना है क्वेश्चन. अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, because we haven't done organic. ठीक है? So just count all these bonds on the left side, right side, and then plug in the bond energy value, do bond breaking minus bond formation and get your answer. इसका displayed form copy कर लीजिए, ठीक है? Done, beta. So we're keeping it till here today, and we will continue it in next session.